हाय 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 हाय। हेलो। हाय बियर्डेड मैन। अरे यार मैं सो नहीं पा रहा था, मैंने कहा चलो कुछ काम वाम करता हूँ। एंड देन गप्पे मारने का भी मन कर रहा था, सो आई थॉट लेट्स स्ट्रीम। कोई भी बंदा आएगा, हाय हेलो करेगा, बात करेंगे, टाइम पास हो जाएगा। सच अ नाइस आइडिया राइट। हम लोगों ने एक नया एमएलओ ख़रीदा था, उसका पीडीएम का। सो यहाँ पे थोड़ी गाड़ियों की लोकेशन सही करनी थी, मैंने सोचा वही कर लेता हूँ। सारी गाड़ियाँ हवा में और ज़मीन के अंदर घुसी हुई है। मुझे एक एक का स्लॉट सही करना है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे DCS।
और बताओ इतना लेट कैसे जग रहे हो? आर यू प्लेइंग सम सॉर्ट ऑफ गेम्स? This is the time for chasing my desire. Okay, cycles, motorcycles. Let's start with cycles. I don't think मेरे को इन जगह पे साइकिल को खड़ी करना चाहिए एटलीस्ट. साइकिल को तो भाई साइड में ही कर देता हूँ मैं. आई थिंक आई विल शो समथिंग लाइक कॉम्पैक्ट व्हीकल हियर. किसी एक का कोऑर्डिनेट डाल देता हूँ मैं. चलो लेट्स स्टार्ट विद द बाइक्स ओनली. ओके.
अभी नहीं, वो अभी पीडीएम फिक्स कर रहे हैं। ईडीएम का एमएलओ, ना ना नॉट ईडीएम, इट्स जस्ट पीडीएम है ये। इसके अंदर क्या है कि हमने वो चेंज कर दिया एमएलओ, तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज हो गए। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसे लग रहा है जैसे ज़मीन के अंदर धंस गई हो वैसे। और यही ऐसा काम है जिसमें अभी मेरे को ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, तो मैंने कहा बैठ के आराम से करता हूँ। अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा इसमें। भाई एडमिन कहाँ चला गया यार, आज तो नाराज़ हो गया है। अच्छा खासा खेल रहे थे हम। मुझको ऐसा लग रहा है मेरे को ना ये पर्टिकुलर व्हीकल्स जो हैं यहाँ पे खड़े करके फिर चेक करना चाहिए। उससे एक फ़ायदा होगा कि मुझे पता रहेगा एग्जैक्टली कि ये गाड़ियाँ यहाँ पे कैसे खड़ी रहेगी, रादर देन जस्ट गेसिंग कि ऐसे ठीक दिखेगी वैसे ठीक दिखेगी। एग्जैक्टली अगर उस गाड़ी को वहीं पे खड़ा करके ही उसके कोऑर्डिनेट लूँगा, आई थिंक इट वुड बी मोर बेटर। सो आई विल जस्ट यूज़ अ व्हीकल, कार, बफालो। आई थिंक दिस वन विल वर्क। बस ये ऐसे ही खड़ी रहेगी, आई थिंक ठीक है। इट्स ऑल गुड। यहाँ पे आई थिंक मैं दो चीज़ें एक साथ रख सकता हूँ। एक एक स्कूटर भी खड़ा कर सकता हूँ, एक साइकिल भी खड़ा कर सकता हूँ। बताओ, इतने बढ़िया जगह पे स्कूटर और बाईसाइकिल खड़ी करे हो।
हाय जय, व्हाट्सअप। कुछ ज़्यादा ही ज़मीन में चली गई है, उसको ऊपर निकालना पड़ेगा। Too late, I was just going. Good night. Bye bye. I know. I understand. गाड़ियाँ बहुत है, स्लॉट्स कम है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट ही करना पड़ेगा अब। अब और कौन कौन से बचे हैं? स्पोर्ट्स कार को वहाँ पे डाल दिया मैंने, कॉम्पैक्ट्स, एसयूवीज को भी डाल दिया मैंने। मसल कार ना, यहाँ पे कोई मसल कार खड़ी करते हैं। कोई मसल कार को कोई चैट में अगर कोई है तो कोई मसल कार का कोई कोड बताओ ना। चलो अभी मैं एक टेम्पररी कोई नॉर्मल सीडान ही ले लूँ।
ये सारे रैंडम स्पॉन्स हटाने पड़ेंगे मेरे को. हाई डेथ वाली वाइटी. थैंक्स. थैंक यू. धन्यवाद. Okay. Now how many more do we have? One. So now continue or weekly stream. Stream, I am not sure, but yeah, I work sometimes whenever I'm free. I stream I only do when I'm super bored. आई थिंक ये बाइक्स वाइक्स को मैं कहीं और शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ से. यहाँ पे भी कोई गाड़ी डाल देता हूँ. इट विल मेक्स मोर सेंस. ऑफ रोड व्हीकल तो बाहर ही रहेगा, तो नो इश्यूज. स्पोर्ट्स कॉम्पैक्ट्स, प्रॉबली कॉम्पैक्ट्स. AC. No?
EC2. Okay. Wow. Doing job or business? Both. दोनों कर रहा हूँ मैं. I have a job and I have a business. And then I have a lot of time also. What is my business? I'm basically a blogger. I have some websites, 2 3 websites where we write blogs. You can say mostly digital marketing. I make money from advertising and publishing. Faga Loa. What is this name? Nice. Nowadays, it's really that everyone started a digital marketing company on Instagram. No, 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 it's not like that. Mine is. So I'm not like a very full time on anything. I started my blog technotification.com. I started it on 2013, 2013, and I'm making money since 2013 on it, and I'm writing articles and everything. So it's been quite a time when there was no Instagram. Like there was Instagram, but not the audience. I don't know. I think Instagram was there at the time. I don't know, but not that famous. उस टाइम से ही कर रहा हूँ. It's been like 9+ years. So not like going with the trend or anything like that. I'm quite old school, by the way. I never explored the video part. I've always wrote articles on the website. And I always like writing articles rather than making videos, because everyone makes videos. It's really easy to make videos nowadays than to write. Every new startup is a digital marketing. And why not? Like when everything is digital and marketing is the way to sell your product. So why not? What is the best way to sell your product than to sell it on the internet?
I'm not talking about you. I know you are not talking about me. I totally get it. I'm just saying that I should also clarify on that also, right? Because we have plenty of time. I don't know about you, but I am having a lot of time right now. So I can say three more extra lines I can add to my answer right now. I see every single ad and page is startup. It's digital marketing company in Instagram. Yeah, because Instagram, I think where the kids are. Like, if you ask me, where are the most dumbest of the audience who can buy anything if you just promote it properly, then I think it's Instagram. People don't think twice while buying anything that is shown on the Instagram. So why not Instagram? Like everybody would want to promote or product their product on the Instagram because people are gonna buy. Very dumb audience on the Instagram. They don't think twice. अरे यार कहाँ पे खड़ा करूँ मैं अपना स्कूटर? I think this is the right place. Car Fagio. It's really easy to influence anybody on Instagram nowadays. I'm having second thoughts right now about this particular interior, but we'll see. Everything looks very flashy and dark at the same time. The only platform I never used for marketing my website, like you'll find it surprising, it's Instagram. I never promoted my website on the Instagram. Yeah, I have linked it on my Instagram profile, but I never made a video or never made a post about it because I never wanted that Instagram audience to be on the website. Mostly, as I know, you are a good website developer, so you review our website and give us feedback on what you say. I see that a lot of things is not good in company website. On your website, do you have a website? Do you need some help? Sure. Why not? You can let me know the link or the domain. I don't call myself a web developer though. I don't know what to call myself as a professional. I do a lot of things and I'm not good at anything. At the same time, I'm somewhat decent at everything. You know what I mean? Like, I can't say that I'm somebody perfect web developer or app developer, whatever people call themselves. I find it really hard to define myself as just one, title. So nowadays I'm using myself like my title as a DevOps guy. So if you call me, what do you do? I say I do DevOps.
because that's even the title I have in the company I'm working. So I think that is also a साइकिल कहाँ खड़ी करूँ नहीं समझ आ रहा. You are working in a company which has a website. It's Experience Saga. Okay, this is the name of the company. Right. So you are working for that company, right? So why do you need like mm, you want me to review? Is it also part of your job also? See, one thing I learned working in a corporate, company culture and everything, that you only care for what you are assigned to. Because it's not your company. It's just company you are working for. And they also doesn't give a shit, and you should also not. I used to be also like a very emotional about my company. Then I realized it's just work. Nobody gives a shit. I mean, like, people care about their work, of course. They also care about the whole product also. But the thing is, there is no attachment like you have with your own product. So the care I have for the websites, I may not have for the company I'm working for. Exactly, right? It's not like they don't know, they know it. They also want you to shut up. Like, they'll be like, Arey, whatever we have, we have. We are making good money also. You should also calm down. Don't complain. So, yeah, it's better to just chill. I think I'll combine two categories. So, that will make a lot of difference. Compacts and oops. I can combine, but then again, no, I can't. Can't combine. That I need to discuss with some people. चलो एक बार के लिए तो मैं ये करता हूँ, मैं बाईसाइकिल्स को यहाँ से हटा नहीं, बाईसाइकिल्स को तो वैसे भी मैंने एक छोटी से कोने में घुसा के रखा है. सो आई डोंट थिंक बाईसाइकिल इज़ अ प्रॉब्लम. आई थिंक आई विल रिमूव दिस panto from here, but that should also not do that. Let's not do that also. चलो एक बार ऐसे ही ना इस खाली स्पेस में खड़ी कर देता हूँ एक गाड़ी गेट पे ही. What do you do, by the way, in your company? If you don't mind.
I'm an operation executive right now. Nice. And what operations, if you don't mind? And nobody's gonna listen to this whole stream when it's done anyway. So whatever you say here or whatever I'm saying, nobody's gonna listen to. Unless somebody is a big fan of me, which I find very hard to believe. Okay, okay, finally I put all the vehicles in their place. At least they are not creating trouble now. No, I don't have any issues regarding. No, I'm just saying, anyway. Oh, nice. We have a lot of space here. I think that's where I can spawn the vehicle when somebody buy the vehicle. Yeah, it's actually a good place rather than spawning here. ठीक है. Sorry. आई थिंक मुझे ऑफिस की लोकेशन भी चेंज करनी पड़ेगी अब. यहीं कहीं करनी पड़ेगी. ये मेरा ऑफिस रहने वाला है. आई मीन जो भी पीडीएम होगा उसका. और मे बी हियर. करंटली बहुत ही गलत जगह पे. Basically, I managed client booking data and call and email. Okay, I understand. Nice. Okay, I think and the vehicle should spawn here. So let me spawn a vehicle. Just to see if it can fit in here. When the VLCRP is coming. VLCRP what? VLT, do you mean VLT? Everyone looking at this MLO of PDM. Oh, I don't know. I bought it like a few days ago. I bought it and then if you ask me whether I like it or not, I would say I don't. I even like the default one, the one we had before. But why I'm using this, it's because, a lot of people just want something different. They want spacious, they want big MLO and everything. And I think I can't just dictate my opinion everywhere. I have to listen to other people also. So I'm making that habit also. And I think it's a good thing.
Let's buy one vehicle and see. Now RP, it's not a game. It's become a version of emotions. That also I am not aware that much, I would say, because I'm not watching any RP. I don't watch RP. I find it really boring when people are doing role play. What I find interesting is coding. I like coding and doing something, making something, and all these kind of things. And yeah, I like when people are making most of the use of what you have made. So, if, for example, if I make a server and there are players who are playing it properly the way I intended to. I mean, obviously, because whenever somebody is creating anything like a software or a website or a game or anything or a server, so they have some sort of things in their mind. That's how it should be used. That's how it should work. I mean, you can't say that's a bias. The people can have their own opinion, their own version, their own way of playing and everything. But the thing is, we do have in our mind already, like, that's how it should work, that's how people should play. It's not so sort of dictating the opinion, it's just because when we are creating something we have to keep in our mind that that's how it should be used. But when it doesn't happen like that, it frustrates you. So if you ask me what I expect people to do in from this server, if I ever gonna make it live, I would expect people to do uh, what you call a good role play, because it's a role play server. So that's my least expectation. I'm not a good role player, but I can expect other players also to do the. What I can do is I can make the best things available to them after taking their opinion. The real truth is just making money, and gang, that's not just may see a best server in RPs. The real truth is just making money, and gang, that it's but I just may see a best server in RPs. NP. I didn't understand properly what you're trying to say, but if you're saying that No Pixel has the best role players, I would say yes. So of course, like, that's how people got to learn about GTA 5 role play, right? By watching them. But if you ask me about No Pixel India, I am not sure because I never watched any of them. But the main server, yeah, I watched a lot of people back in the days.
This car pickup is looking good. Yeah, we have modified handling of a lot of cars in this server. Okay, I find one weird thing. This car color has changed after I took it out. Let me check again if I'm wrong. Maybe I don't know. No, it's red. Yeah, I think it was red. It was red, right? Yeah, it was. Fuck. What's happening to me? Getting old. Later, hater. Okay. Now that we have fixed that, I need to do one more thing. I'll have to check my bank. I was doing something on the bank script to check how it's going. It is working. I only love that one script of legacy servers is property, which is really good script, which includes a lot of things. I agree. I'd agree. Like when I played on the legacy servers before, and like when this update came, right, I was like really happy. It gave us a lot of things to do. Like we started doing this real estate RP and all this business RP and everything. That's how we started doing. It was a lot of fun. It was fun, like buying houses, buying properties, and everything. I don't know if it's changed and you are talking about something which has changed, but like I remember when that housing system came out on Legacy way before, like 3 4 years ago. I mean, if you are talking about that, yes, it was really nice. If anything has changed, I am not sure. Okay, that I needed to fix. I forgot. I see this pillbox Hill Medical Center. If that's never seen in any server, also not. I mean, it's okay. Like you won't see everything that you see on the other server on the no pixel. There will be, of course, a lot of differences. We on NDRP, even though we are like very small developers and we were learning a lot of things, but yet we made certain stuff on NDRP which were not on the no pixel also. Like I'm not saying that we've done something better than them or something like that. I'm just saying it's like we can do different. It's not a big deal. A lot of people do. Okay, I am a bit confused. Where was the script where you could remove this pillbox Hill Medical Center? But it is a Lua file. Like why it is showing?
Okay, it was Bob IPL. Ah, got it. Yep, differences have become a good server like NoPixel has been updating good new things in every week or months, which people never think that it's happened. Like in every roleplay server, they should update as if they have developers. It's a constant thing. It's like it's not like a what I was saying अभी रात को पता नहीं क्या हो जाता है. I'm not saying you should stop at some like goal or something that's where you want to fix it, and then you will bring some update like it's 3.8 or 4.0, and then you go to 4.5 and all. I don't think you should wait for these sort of updates. You should keep making changes as you go, like every other week, not like every 3 months, if you can. But if you can't, then that's a different matter. Oh yeah, finally open the door. Only every month who say he's a developer in Indian local boy of age 15. They don't even know about Lua charges like 3 or 4, 5k months and copy paste. What a scammers. See, I mean, I can agree and I can also say yes, yes, but I look at from a different angle. I think when you are 15 years old, right, whatever work you are getting, even by just, so it's not a technically scam. It's something that some people don't. And you are
putting your time into it. For example, if somebody who is just a 15-year-old, if he is using his mind to even get some sort of scripts from somewhere and making some server, and then it's creating a demand among some people, like they want them to make a server or anything like that. I mean, if that guy is pulling it out, if he is doing that successfully, if he's making money out of it, then he may not, like he can get a really good direction in his life. He may become a good developer in when he become at the age of 21, like 18, 21. At that time when he joined college and everything, because he technically becomes a geek, somebody who just break and make and all. अरे नर्ड सर कैसे हो? हाय पीयूष मक्कर. बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ. कौन है? और सर्वर में है क्या कोई अभी? 2 player ऑनलाइन बता रहा है. हु इज़ दिस अदर गाय? हु इज़ दिस? इसको रिपोर्ट करता हूँ मैं. इट्स 3 हीरा. और इज समबडी देयर और इट जस्ट प्लेयर इज़ नॉट ऑनलाइन. आई थिंक कुछ ग्लिच हो रखा है. आई नीड टू फिक्स दैट एज वेल. कल लाइव नहीं आए आप? अरे आज भी आ गया, बस ऐसे ही मैं. आज भी फिक्स नहीं था कोई आने का. So basically I got tired of listening to all those podcasts. Now they all sounds the same. मतलब कोई सा भी टॉपिक उठाओ, मेरे को ऐसा लग रहा है सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, मतलब एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि लिटरली अगर वो इंसान एस्ट्रोनॉमी पे बात कर रहा है तो वो पॉलिटिक्स की बात भी कर रहा है. मतलब इस चीज़ का कोई दूर दूर तक लिंक नहीं है, बट इतने पॉडकास्ट सुने, इतने लोगों का बिहेवियर देखा है मैंने. आई जस्ट फील लाइक एवरी वंस द सेम, एवरी टॉपिक इज़ द सेम. घुमा फिरा के उसी बात पे आ जाते हैं सारे लोग. आजकल का वो कल्चर ऐसा है. सो व्हाट हैपन, आई यूजुअली व्हेन आई एम नॉट स्लीपिंग आई लिसन टू सम पॉडकास्ट, जस्ट ज्ञान बढ़ाने के लिए, राइट. अभी मेरे को वो सुनने का भी मन नहीं कर रहा था, तो आई थॉट व्हाट टू डू. आई वाज लाइक चलो कोडिंग करते हैं. देन आई वाज लाइक अरे अकेले बैठ के कोडिंग करना भी बोर मारेगा. आई वाज लाइक चलो स्ट्रीम कर लेता हूँ. किसी के सामने तो मतलब सॉरी गाइस, नो अब्यूज़. किसी के सामने तो ज्ञान दूंगा मैं, मुझे नहीं पता आजकल मेरा स्ट्रीम कोई भी देख ले, सो आई वॉन्ट बी यूजिंग एनी अब्यूजिव लैंग्वेज एट ऑल. ये मैस, तो ये पूरा बैक स्टोरी है व्हाई आई एम स्ट्रीमिंग राइट नाउ. वो हेलो हाय, वो व्हाट्सअप. सेम्स लाइक अभी अभी अकाउंट बना के आया है वो. इतना जल्दी जल्दी में नाम रखा है यूट्यूब चैनल. व्हाट इफ NDRP इज बैक? इज दैट पॉसिबल? आई मीन सी अल्टीमेटली दैट्स व्हाट आई वांट. दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग, बट हु नोस. I get burned out very easily. I work for one day and for next 1 month I'm just doing some other things. But there is this thing called FOMO, है ना. FOMO हो जाता है कभी कभी ऐसे ही.
ऐसा लगता है यार, नहीं यार, आरपी सर्वर होना चाहिए यार। ग्लोवाल है किकी, हाउ यू ब्रो, क्या चल रहा है? अरे वाह, क्या बात है। ये बता देखो, रात को स्ट्रीम करते करते कभी कभी एकदम फेमिलियर चेहरे नज़र आ सकते। आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ आर यू डूइंग? एच डी जे, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर शार्कॉन। आई थिंक तुम ही थे एस डी जे नाम से परसों। आज तक मेरे को लैंडिंग करा, मेरे को आई थिंक आई न्यू बट आई फॉरगॉट। Now I have this username from a while. Just run out of name ideas. Okay, you go to chat.openai.com and then ask. Please suggest some cool YouTube names. Thanks. Nice landing. Hi Leo, what's up? So you'll probably get some ideas. By the way, guys, I implemented a whole billing system. मेरे यहाँ तो मॉर्निंग है ब्रो, इन क्लास राइट नाउ, हा हा। लेट मी गेस, कनाडा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। आई एम जस्ट गेसिंग, ठीक है? मैं 2 कंट्री के नाम बता रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड। चैट जीपीटी ब्लॉक्ड है, यूनिलैन। अरे रे, कोई नहीं यार, बिंग तो चलता होगा ना, बिंग पे जाके पूछो। आजकल बिंग ने इंटीग्रेट कर लिया उसको। सेकंड वन, ओके नाइस। व्हाट यू स्टडिंग, क्या पढ़ाई चल रही है? देखो भी मेरे को बिल भी आ गया होगा उसका। वेर इज़ माई बैंक, वेर इज़ माई बैंक, ये रहा। हॉस्पिटल -$6, ट्रीटेड एंड सप्लाइड ग्लूकोज 6 मिलीलीटर। ठीक है गाइस, दैट मच ग्लूकोज चाहिए था बॉडी को, केवल 6 मिलीलीटर का। इसी से काम हो गया हमारा। ओके, अब मुझे नहीं समझ आ रहा अभी मेरे को क्या करना है इसके बाद, इसके बाद। तो अभी हमने क्या करा था, क्या चीज़ फिक्स करने थे? अच्छा, मैंने ये हॉस्पिटल का दरवाज़ा ठीक कर दिया, जो कि थोड़ी तकलीफ़ कर रहा था। एंड देन आई स्टार्टेड ऑल दोज डोर्स विच वर नॉट वर्किंग। टेलीपोर्ट्स चल रहे हैं। पीडीएम पे गाड़ियों की लोकेशन सही कर दी। आपको पता है 5M को आप 2 क्लाइंट चला के 2x 5M सकते हो, टेस्टिंग सिंक बाय योर सेल्फ ओनली। आपको पता है, मैं ओल्ड स्कूल बंदा हूँ, मेरे को तो अभी वही पता है। मैं जब NDRP के टाइम पे कोडिंग कर रहा था ना, तब कैसे करते हैं। उसके बाद अब कोई भी चेंज हुआ हो ना, तो मेरे को लिटरली कोई आइडिया नहीं है। ड्रिंक वाटर, लाओ पानी पी लेते हैं बिना ग्लास के। पानी पीने का भी रोल प्ले कर सकते हैं, दैट्स। What is the most difficult English song you think is hard to sing? मतलब मेरे लिए तो बहुत सारे हैं, आपके लिए तो एक भी नहीं होगा, आई एम प्रीटी श्योर। बट आई think all those metal songs, they are really hard to sing. आप तो चले गए, मैं कहाँ चला गया था भाई? तो अच्छा, तुम बाजी को पूछ रहे थे। ये इसमें थोड़ा थोड़ा रिफ्यूलिंग का बता देता हूँ, मैंने रिफ्यूलिंग का क्या सीन रखा है।
रिफ्यूलिंग का मैंने एकदम मतलब पूरा सिंपल ही रखा है, फिर पूरा स्क्रैच से उसको मॉडिफाई किया. Do you code NUI as well? Yes, I do. तो क्या आ रहा है ना, गाड़ी के ऊपर आया देखो. E to refill. So you need to stop engine. So first I need to stop the engine. Okay, now I can start refueling. जैसे जैसे टैंक में कितना बाकी है उतना बिल भी हो रहा है. आई कैन जस्ट स्टॉप एनी टाइम और उतना पैसा कट जाएगा. So all you have to do is just go near some fuel station. जैसे हम उसके स्टेशन के पास जाओगे ऊपर रिफिल का ऑप्शन आ जाएगा गाड़ी के ऊपर ही. यू जस्ट स्टॉप योर इंजन ओवर देयर और तुम्हारे व्हीकल में पेट्रोल भरने लग जाएगा. जस्ट अज्यूम समबडी इज़ फिलिंग अप योर. मेरे को वो सारी नली नली लगाए और कोई एनपीसी खड़ा हो, इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी थी. ठीक है, इतना इमर्जन नहीं डालना है. ठीक है, क्योंकि लोग उसे एनपीसी को भी जाके ऐसे ही मुक्के मारेंगे फिर. भैया टंकी फुल कर दे. हाँ, वहाँ पे जाके ऐसे बोल सकते हो फॉर रोल प्ले. मनी कैश इन्वेंट्री में रहेगा अभी करंटली ऐसे ही है, बट आई विल चेंज इट. लाइक आई डोंट वांट मनी टू बी इन द इन्वेंट्री बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, लोगों के हाथ में इतनी चीज़ें नहीं देनी चाहिए. मुझे पता है, मैंने चलाया हुआ है सर्वर 8-10 महीने. दैट्स वन जोक दैट केम फ्रॉम 3 इडियट्स. कौन सा जोक था? रुको, मेरे को ऊपर जाके देखना पड़ेगा. नॉइस लैंडिंग. इडियट्स अब मिलीमीटर था जो सेंटीमीटर. ये किस रिगार्डिंग था? मैं तो कॉन्टेक्स्ट ही भूल गया हूँ. Well, I have a little query. Yeah, you ask me. What query do you have? In last scene, एक सेकेंड यार. That's one joke that came from 3 idiots. अब मिलीमीटर था जो अब सेंटीमीटर जो चुका है, जो बन चुका है. In last scene, भैया टंकी फुल कर दे. पंप के प्रॉप के नियर ई टू रिफिल आता है. हाँ, वही तो आता है. कफ एंड टेक ऑल मनी ईजी. हाँ, वही तो. सो आई जस्ट अगेन शो यू, अगर तुमने ध्यान से नहीं देखा हो तो. मुझे उल्टा गाड़ी चलाने का बड़ा शौक है गाइस, डोंट माइंड. ये देखो ई टू रिफिल आ रहा है. कैन यू सी? नहीं सी तो देखो, 1 मिनट रुको. टाइम जो है वो रात का कर देता हूँ, सब दिखेगा. दिख रहा है? इंजन बंद करके इसकी टंकी फुल कर देते हैं. या ऑब्वियसली. सो इट्स फुल्ली लाइक कस्टम कोडेड फ्रॉम द स्क्रैच. ये मैंने आई थिंक 6-7 महीने पहले ही कर दिया था. मैंने सबसे पहले आई थिंक फ्यूल का स्क्रिप्ट ही बनाया था. अब गाइज मैं क्या सोच रहा हूँ, एक बढ़िया फील्ड ढूंढता हूँ जहाँ पे बहुत सारे पेड़ वेड़ हो. वहाँ पे कुछ पेड़ स्पॉन करता हूँ एंड फिर उसी को लंबर जैक वाला जॉब में कन्वर्ट कर देंगे. Can you do that? When we press E, then an NPC appears. After completing it disappears. I mean, you can do anything. It's not a big deal. The only problem is, well, it's not a sort of problem, but I always have that mindset that I had
back in the days, like when I was working on NDRP, I saw a lot of things that could cause a lot of issues, right? So I'll just give you an example. When you spawn some NPC, right? When you make some NPC appear, and you want that this NPC should be disappeared once the job is done. But what happens sometimes there is this 5M had a lot of weird bugs where the vehicle are not despawning, where the NPCs are not despawning, and sometimes there are a lot of NPCs spawning, and all these stupid issues which had no connection to coding whatsoever. It was just 5M bugs. So I always have that mentality now. I don't know whether they have fixed it or not because it's been like 2-3 years, and I'm not sure if they have uh, fixed or not. So in my back of my mind, it always like that. So I always avoid these kind of implementation where I have to spawn some NPCs. I do spawn NPCs and everything. I do, like wherever the interaction is a lot needed, where I do, but it's just unnecessary just to add some sort of like when somebody is refueling the car, अभी उसको केवल 10 लीटर का तेल भरवाना है, उसके अंदर वो जाएगा, उसके लिए NPC आया, अब वो क्या होता है, डिसअपेयर नहीं हुआ। अब कुछ NPC ऐसे होंगे जो लोकली स्पॉन होंगे, वो एक बंदे को दिखेंगे, दूसरे को दिखेंगे ही नहीं, दिल भी लाइक। और कुछ NPC ऐसे होंगे जो इमोटल्स होंगे, उनको तुम 10 मुक्के मारोगे तो भी वो मरेंगे नहीं, क्योंकि अगर तुम उनको मोर्टल बनाओगे तो लोग उसको भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब वो बताओ कैसे करेंगे? दे स्टार्ट सेलिंग सम सॉर्ट ऑफ वीड और समथिंग। वो भी नहीं हुआ तो उसको मुक्के मार के, या फिर कार में बैठे बैठे जब वो पेट्रोल भर रहा होगा, कोई ऐसे गन निकाल के उसको गोली मार देगा, फिर क्या होगा? वो नली वैसे लटकी रहेगी वहाँ पे। मतलब सारा इमर्जन ब्रेक, हर जगह कुछ ना कुछ, मतलब लोगों को चुल मची रहती है। यू डोंट अंडरस्टैंड, बट आई नो ऑल दिस थिंग्स, आई हैव ग्रोन थ्रू इट। तो मैंने सारी चीज़ें देखी हुई है, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड हर जगह मैं कुछ भी चीज़ लिखता हूँ, कुछ भी चीज़ करता हूँ ना, ये सब चलता रहता है मेरे माइंड में। अभी वो ऑडियंस को वो चीज़ नहीं समझ आई, कभी नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने वो उस एक्सपीरियंस से नहीं देखा उस चीज़ों को। उन्होंने उस तरीके से लाइक, शायद हो सकता है तुमने कोई स्ट्रीमर देखा हो, या तुम खुद ऐसा रोल प्ले नहीं करते हो, या तुम्हारे फ्रेंड ऐसा नहीं करते हो, बट हम लोग जब सर्वर चलाते थे ना, तो हम पूरा टाइम देखते रहते थे, हर एक इंसान को देखते रहते थे, स्पेक्टेट करते थे, लोगों की कंप्लेंट्स फिक्स करते थे, और ये इश्यूज इतने आते थे ना भाई। Now 5M has its own encryption, and now no one does dump that server script. And that's good actually. Like whenever I'm making some script, I don't want some people to just steal it or something like that. But anyway, अगर कोई steal कर भी ले तो कोई, देखो, I'll be pretty honest, like a lot of scripts that I've used in NDRP were not my own, okay? It was created by somebody else. It was open source. I used it, I modified, and that's how I got to learn the whole 5M thingy, because I've never coded a 5M server before. I was a web developer, I was a Linux administrator, I was a LAMP stake developer, I was not a 5M developer. So to understand, I had to buy I have to get a lot of scripts from wherever I could get, just to understand how it works. And the whole NDRP 4-5 months was just experimentation. Like I was putting something, removing something, adding something, removing something, understanding something, testing something, and all that happened. Anyway, it's nothing like anyway. What is it? It's just a UI, right? You are creating an HTML, JavaScript, CSS UI, and then you have to just plug it with your 5M code. So if you are a web developer, you know how to make UIs, you know how to make a website, you know how to make a web page. All you have to do is to just understand how do you pass that information to the UI. So basically, I'll show you an example, but ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ. So what happened, for example, in a game, so let's say your HP is 100 HP, okay? Now you want to show that HP होना, नीचे ये बार जो दिख रहा है ना HP वाला, तो उसमें तुम्हें दिखाना है उसको कि जब 100 हो तो वो पूरा हो, फील्ड हो, एंड थोड़ा तो जैसे जैसे कम होता जाए वो उसका क्वांटिटी कम होता जाए. तो व्हाट यू हैव टू डू, ऑल यू हैव टू डू इन योर लुआ,
with 5M you can track the user matlab player's HP, and then you just send that information to your JavaScript, and that JavaScript code will show it on the HTML page wherever you have defined the style in that particular style. That was very simple, I understood. But yeah, I'll tell you, when I was working on NDRP, like early days, I didn't know that. It's not like I couldn't know. I could learn easily, like if I had given proper understanding and everything, but I always chose not to. I just found it a bit confusing at that time. I was like, भाई ये क्या चल रहा है? मेरे को लगा अपना करना ही क्या है, अपना काम चल रहा है. So I was just making some modifications on top of that. I was never dwelling in the deep. But after that, when I stopped NDRP, I got plenty of time to experiment on anything, So what I did, okay, so for this NDRP, I'll tell you what I did. This NDRP is not the old NDRP. And also it's not ESX framework. It's not QB core framework, okay? So if you tell me that, like, अगर तुम पूछोगे कि whether it's a custom framework, I would say no, it's not like my own framework, but I have made very deep changes into this whole ESX framework of NDRP that I had. To that extent, it's not ESX anymore, okay? It's totally changed. And also there were a lot of good features in the QB framework, which I always liked. I mean, it was very easy to manage. So I took that part also into my framework. And there were a lot of other features that were not on either of the frameworks. Like ESX पे भी नहीं था, QB पे भी नहीं था. I needed to make my own features. So I implemented those features also. So अभी तुम बोलोगे ये क्या है, तो it's basically a रायता framework. You can call it रायता framework. तो मैंने रायता फैला दिया है सब जगह. But it's a framework that I created from my experience. I knew what worked on NDRP. I knew what was causing problem on NDRP. I know what is the problem with ESX. I know what are the problem with QB core. So my first goal was to eliminate all those problems, make the framework ready for the future resources creation and everything, which I have the vision for the NDRP. So for 2-3 months I did nothing, but I just made changes on that framework only. So all the changes, all the performance related changes, all the bugs and everything, they will not arise in this server because I've already modified the whole thing for my own purpose. And it's the first thing you should do, which I realized in NDRP, because the NDRP was just an experiment, the old NDRP. And this time I wasn't doing any experiment. I was just making it proper right from the beginning. Okay, now I'll read your comment. Now 5M has its own TK पढ़ लिया. How did you learn? Okay. I know you are testing on a live server and someone sees you. You are going invisible every time. No, it's not like that now. Everybody knows that I am working on a server, and I never claimed that I'm gonna make it a live server. What is your base of framework custom made? I think I have explained it. So okay, so I'll tell you what different we have on this server. Okay, this server has a skill system, which is not on any server right now. I mean, they can implement if they want, and I don't think it's very hard to implement for them also. But I have implemented this skill system right from the beginning. Now, if you ask me, like, what is this skill system? So, for example, all these mining areas. Okay, I think I'll show you. I just created an NUI also. It's a very simple basic NUI. But you see, I have these skills: fishing, harvesting, logging, mining, and all these skills. Oh my god! And all these skills have certain levels. Okay. So it's, if you have played any game like RPG game before, not roleplay game, RPG game, which is also a roleplay game. Of course, it's the full form, but I'm not talking about GTA roleplay. You know that there is a level progression system, there is an experience system. So that's what I've implemented here in this server. So whatever activity you do, you earn some experience from it. And as you get more and more experience, which you call XP, you
increase your level. Yes, yes. So criminal activities will also require skills. Uh, Mining will also require skills. Harvesting will also require skills. Cooking will also require skills. Fishing will also require skills. Even certain part of EMS will also require skills. Certain part of police will also require skills. And if you ask me why, it's because it will give a lot of people a purpose to do something in role play. Right? If you are sticking to your role, right, you should be rewarded for it. So with the level up, you will always feel rewarded. So, for example, if I'm somebody who is a woodworker or lumberjack or whatever, so if I do logging a lot, so if I get to level 10 of logging, I may be able to wield a better axe. I may be able to wield a better tool. I may be able to get better wood or more wood from the trees. Maybe we're able to chop on some areas which are restricted to certain levels, right? Yeah, that's how we can control the fast progression, and that's how it's gonna do. So if you ask me, like, how do I integrate skill system with the criminal activities? So I'll just give you one example, and you'll understand. For example, this bank robbery, right? So to rob a bank, you'll have to hack certain things, maybe some doors or some computers and everything. So hacking is also a skill. Okay, not everyone can be a hacker, and not everyone can be a big, huge criminal. So you will need somebody who's an experienced hacker. And how would you be an experienced hacker? By hacking a lot. So someone who is doing a job of an ethical hacker, we can create a whitelisted job or a normal job at a job center where people can just go to certain areas and fix some machines and hack into some system to, So if you are an ethical hacker, you know how to hack, right? Or you can be an illegal hacker also. And also, like, if you are a totally criminal hacker or anything like that, you can also do, like, there will be certain activities on the server where you can just go and break some systems, and it will reward you with your experience. It will level up your hacking skills. And when you go to a bank, you try to rob a like, you try to hack a PC. It will, if you have certain skill, like, I'm not okay. So we are not gonna restrict like everybody to do some role play with the skill system also. Even if you have a zero skill, you're gonna do the task, but the success rate of that task will be very less. The output that you will get will be very less. Why I'm saying this is because, a lot of people, they just don't want to grind for their skills and their level, and that is completely understandable. They shouldn't miss the whole experience, right? No. The hacking and everything, they'll not be like this. It's not that you'll just have to watch somebody, or you'll have to do it. For example, if you want to play a guitar, right? You can't just watch a lot of streamers and then you will think that you will learn guitar in real life. You'll have to do it on your own. You'll have to practice it. So all these skills will require practicing, hacking and cooking and everything. So you may be like, sometime when you are cooking, maybe you will put a lot of oil in that food and this food will be spoiled and everything. That can happen. So you have to understand that you have to put everything in a very proper manner to get more skill points, more experience, better experience. And that will happen. So first, what I'm doing right now is just fixing the basic things which needs to be fixed. Like, in every role play server, when somebody comes to the server, so you're gonna make it like some whitelist jobs will have decoding things or hacks that will level you up. No, I don't think it will be a whitelisted job. I think anyone can be a hacker. There will be jobs, just like on a job center. The hacker job will be a normal job, just like a garbage job. Okay. All you have to do is to, like, do that job
go to that area, fix that PC. And if you are a good hacker, then you will be able to fix it properly and you will get more XP. If you are not a good hacker, so if you ask me how do you become a good hacker, that's all up to you. It's just how do you aim your gun in Valorant, right? Everyone can aim, everyone can shoot, but not all gamers are like sharpshooters. It's just like that. So you'll be making custom new mini games that exactly, that's what I'm saying. Those mini games will require you to use your brain, will also require your analytical ability, also your logical ability. Okay. So, for example, there is some game that will require some calculation that you need to solve this. Now, if you are a really good at solving those puzzles, then you'll be able to crack those systems. If you're not able to, so these will be the next challenge. I think this will be the next big thing that we'll be doing. It's like exactly a IT job. Yeah, I think yes, you're right. That IT job, there was a mini game, right? So there will be a lot of mini games we'll be putting in the server. And also I think we'll be, so I had this idea of you know institute, like there can be an educational university or something in the role play, which a lot of server, they don't have student RP or college RP or professor RP or anything like that. So what we can do is basically you have to go to certain place as a student, you have to pay the fees also. Okay. If you go there, you learn something. Like how do you learn? So I have played a lot of MMORPGs. So there is this system called recipe system. Okay. So if you are a cook, if you get a recipe from somewhere, you can unlock that recipe and you can learn certain things from it. It will unlock some crafting for you. So like this also, if you go to some college, you spend some time there, you attend some classes or everything, you do the role play of it and all, you may get some drop of certain lessons. This recipe I can replace it with lessons, and that lesson may increase your level or your experience because you will read that lesson, right? So by reading also you experience a lot of things, you understand a lot of things. So with that particular lesson, it will increase your experience by 2 time or by 3 time. So when you are hacking for next time, you will get your level up faster just by becoming a student of this particular college degree or anything. So it could be fun. I mean, I have a lot of role play ideas which will be different also. पानी पी लो, गला सूख जाएगा। नहीं, मेरा ऐसा नहीं होता, तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी बातें कर सकता हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ज्ञान व्यान। आई एम लाइक नंबर 1, आई एम फेमस फॉर इट। नो नीड, यू लुक हेल्दी इनफ। चलो यार, मैं और कुछ एक दो चीज़ और कर देता हूँ एंड देन आई विल कॉल इट। ओके, आई थिंक आई हैव, so guys, basically what we did, we got access to all the maps of gaps. ठीक है, जो गैप्स ने जितने भी मैप बना रखे हैं ना, वो सारे मैप हमने ख़रीद लिए एज अ सब्सक्रिप्शन। कुछ 20 यूरो और समथिंग है। तो व्हाट वी कैन डू, बेसिकली एक बार जाके वहाँ पे विज़िट करके आ जाते हैं, जस्ट टू चेक क्या क्या चेंजेस हैं। मैंने खुद नहीं चेंजेस चेक करे बिकॉज देर वर लाइक 52 of them. So all the banks are changed. मैं बैंक दिखा देता हूँ। I think by now like every server must be having all these MLOs. कौन पीछे रहेगा इसमें? तो ये बैंक्स वगैरह जो है वो ऐसा चेंज हुए हैं, थोड़ा इंटीरियर चेंज हो गया उसका। ठीक है, आई नो वेरी वेल। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं। पीयूष आई थिंक नया इंसान है, इसको नहीं पता।
आई थिंक इन्होंने बार्बर शॉप भी चेंज करी थी ना, टैटू शॉप भी चेंज है क्या, लेट मी चेक। इज इट डिफरेंट, क्या टैटू शॉप ऐसी थी या अलग करी है, कुछ चेंजेस है? हाँ या ना बोलना, ठीक है, मेरे को इतना आइडिया नहीं है पहले कैसी थी ये। ओह ये ओपन, आई डोंट नो पहले होता था कि नहीं होता था। सो दैट वाज द टैटू शॉप। लुक्स सेम, नॉट श्योर, ओके, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट इट। ओके दिस इज़ द बैंक, पैसिफिक बैंक। इसका इंटीरियर भी उसी के अंदर इंक्लूडेड था, तो ये भी चेंज हो गया है पूरा। सो इट्स नॉट लाइक द बेसिक जी टी इंटीरियर, इट्स वो गैप्स वाला इंटीरियर है। ये तो डिफरेंट है ना, ठीक है, अच्छा लग रहा है ये। लिटिल चेंजेस, हाँ थोड़ा बहुत मुझे भी लगा टैटू चॉप में, वो पीछे पूरा वो टैटूज़ का वो लगा रखा है ना, वो डिफरेंट है। तो ये अपना यहाँ पे था, ये वाला बैंक। नेक्स्ट अप बहुत कुछ है, मुझे अभी तक याद ही नहीं उन सारे जगहों के नाम। आई थिंक ओ ये भी कोई नया ही है ना, अप एंड एटॉम बर्गर, ओके। ये कोई रेस्टोरेंट का इंटीरियर है, गैप्स का है, मैं कह रहा हूँ ना सारा ही गैप्स का है। जितने भी इंटीरियर, मतलब गैप्स के जितने भी इंटीरियर थे ना, हमने सारे ले लिए, सारे के सारे। गो इनसाइड वॉल्ट, नो क्लिप, इट इज़ सेम एज नो पिक्सल। ओह आई डिडंट नो, नो पिक्सल पे अभी कैसा है मुझे वो भी नहीं पता तो। नो पिक्सल पे तो सारे गैप्स ही बनाता है ना वो भी। Okay, so this is also a good interior for a potential business RP. I like it. तो यहाँ पे अपन अपना बर्गर शॉप यहीं खोलेंगे, क्या नाम है, अपन एटॉम बर्गर, ओके। और आगे देखते हैं, आई थिंक यहाँ पे भी कोई है, यहाँ पे भी कोई ना, यहाँ पे भी है क्या, नहीं यार मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ये कोई इंटीरियर है, डोंट टेल मी। ओह नहीं, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा अजीब सा कि यहाँ पे कोई इंटीरियर बना हुआ, द फक। You got all these for 20 euros, yes. It's a subscription, like I have to pay like every month. वैसे वो भाई ने स्पॉन्सर किया इस महीने का तो। इसका भी इंटीरियर डाला है क्या? रूस्टर मिला, रूस्टर क्या है, कहाँ पे है, इसकी लोकेशन बताओ, होगा वो सब मिला होगा हमको। मेरे को लगा यहाँ पे भी कोई इंटीरियर है ना यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सारी जगह मैंने पहले देखी नहीं है, क्या मैं GTA काफ़ी दिन बाद खोला है क्या? जस्ट वांट टू नो व्हाट विल गैप्स, नो ब्रो ऐसा नहीं होता है, तेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज एवरी मूवी गेट लीक्ड ऑन द मार्केट, राइट? हर एक बड़ी मूवी जो आती है वो सारी लीक हो जाती है, बट व्हाट डू यू थिंक दोज मूवी मेकर्स डोंट मेक मनी? दे डू, everyone knows that a lot of things will get leaked online, whether it's music, whether it's code, whether it's MLO. Oh,
तो सेम ही लग रहा है. But they make money because people like us who can pay, they pay. Okay, a lot of people who not pay for the things they consume every day, they think like, how would this particular creator will make money if people like me are not paying. They can copyright. Yeah, obviously, if it's their right, like if you are using their system, their oh, I think I can go inside. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं अंदर ही है, मुझे ये भी नहीं है काम की. If you haven't licensed anything and you are using their product, then of course they will give a copyright claim, or why not. हाय कुंज, गुड मॉर्निंग. क्या बात है, 5 बज गई क्या? अरे वाह, काफ़ी स्ट्रीम कर लिया यार. मेरे को लगा मैं इतनी देर नहीं टिक पाऊँगा, सो जाऊँगा, मैं बंद कर दूँगा. आई थिंक ये सब पीयूष ने मेरे से बातें करवा ली काफ़ी सारी. रूस्टर कहाँ है बताया क्या तूने? बिहाइंड दैट चाइनीज़ एमएलओ. चाइनीज़ एमएलओ के पीछे था क्या? आई थिंक गैप्स का जो खुद का सर्वर है ना, उसके ऊपर जाके आप हर एक लोकेशंस के ऊपर टीपी मार के चेक कर सकते हो. गराज के पास है वाइनवुड वाले. मुझे तो ये भी नहीं पता वाइनवुड का गराज कौन सा है. यहीं पे कहीं आस पास है क्या, ये बता दो बस, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ. हाँ या ना बोल दो. यहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है कि राइट लेना है? लेफ़्ट ही लेना होगा, वाइनवुड तो उधर ही है. ऑन योर लेफ्ट, ऑलराइट. ये तो नहीं, ये पे मुझे कोई नई नई जगह दिख रही है. ये तो नहीं ऐसा कुछ, या फिर आई मे बी स्टूपिड ना. यही है क्या? यही है ये तो नहीं है. हार्डकोर कॉमिक्स के सामने. यार मैंने नाम अभी कहीं पढ़ा है जस्ट. हाँ ये रहा ना, हार्डकोर कॉमिक्स. ये वाला कह रहे हो क्या तुम? ये वाला I don't think so. Nope. यहाँ का कोई इंटीरियर नहीं है. हाय नाइट फ्यूरी. गाड़ियाँ अनलॉक नहीं होती है क्या? ये मैंने सारी बाय डिफ़ॉल्ट लॉक कर रखी होगी, देखना पड़ेगा. स्टेयर से जाके भी देख लिया. लॉन्ग टाइम. यस हाय, लॉन्ग टाइम. हाउ आर यू? नाइट फ्यूरी मारियो नॉट फ्रॉम बारियो है क्या? हाँ यार मैं तो भूल गया है, मारियो नॉट फ्रॉम बारियो भी कोई था.
चलो मैं एक्चुअली ये करूँगा, मैं चेक करूँगा लाइक हर एक जो भी है मैप, या इस वाले पीढ़ी का है क्या, हमें लोग करके इस पीढ़ी का भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है फिर। थिंक इस पीढ़ी का होना चाहिए, नहीं है। ओके लास्ट आई विल चेक कैसीनो, आई थिंक कैसीनो का तो होगा ही होगा, कैसीनो का होगा तो आई थिंक एवरीथिंग इज लोडेड परफेक्टली एंड जस्ट आई एम लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेस। Yep. बाय द वे इस वाले बिल्ड में मैंने कायो पेरिको भी ऐड कर दिया है इस कायो पेरिको का पूरा आइलैंड भी है इसमें। साउथ साइड इम्पाउंड लॉर्ड के साथ पुलिस स्टेशन का होगा, हाँ है वहाँ पे है। अच्छा वाइनवुड पीढ़ी कोई यूज़ नहीं कर, अच्छा तो फिर नहीं होगा, इसका मतलब होगा ही नहीं फिर। आई थिंक ये पलिटो बे वाला जो पीढ़ी है इसका एमएलओ होगा इसके अंदर। थे सारे मैंने पढ़े थे, तो हमने तो सब्सक्रिप्शन लेके सारे के सारे सर्वर में डाल दिए जस्ट फॉर द टेस्टिंग। सो अभी हमें पता नहीं है कहाँ पे क्या चीज़ है। उस सर्वर में ये भी बता रखा था कि लाइक यू कैन गो, लाइक यू कैन टीपी टू दोज प्लेसेस एंड सी बाय योरसेल्फ, बट हमने वो नहीं किया। अरे पुलिस स्टेशन कहाँ है यहाँ का? मेरे को जस्ट यहाँ का पुलिस स्टेशन यहाँ वो सामने है ना, आई थिंक वही देख लें, उससे आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पुलिस स्टेशंस भी हैं। और तो फायर डिपार्टमेंट है। मैं इतना डम हो चुका हूँ, मुझे नहीं पता अब कहाँ पे क्या चीज़ है। थैंक्स यार, थैंक्स शारकॉन, इतना बड़ा गाड़ा आ गया मेरे से। आपके एफ क्यों नहीं आ रहे यार? पहले तो मैं 1080p में स्ट्रीम कर रहा हूँ, दूसरा मैंने 100 चीज़ें चला रखी है अपने पीसी में, और तीसरा मेरा पीसी टट्टी है। बाकी मेरे को आ जाते हैं ऐसे GTA 5 में 120 से 130 FPS सारे, अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, केवल GTA खेल रहा हूँ। हाँ है गाइस, पीढ़ी वेड़ी का इंटीरियर भी है। हैक्स किधर भेज दूँ? अरे यार हैक्स वैक्स ये सारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो और उसमें भेज दो। अब बस अपन निकलते हैं यहाँ से। मैं केवल पीडीएम पे व्हीकल्स की पोजीशंस फिक्स करने के लिए आया था, बट एक दो चीज़ें और फिक्स कर ली और फिर उसके बाद मैं पिछले आधे घंटे से इधर उधर दौड़ ही रहा हूँ, सो रादर अब सो ही जाते हैं। एचयूडी चेंज करोगे? नहीं यही रहने वाला है, मैंने ऑल इनफ चेंजेस कर दिया इसके अंदर। मेरे को तो अच्छा लगता है, अब मुझे नहीं पता लोगों को कैसा लगता है। तुम बताओ गाइस, जो भी स्ट्रीम देख रहा है, इज़ इट गुड और बैड? ठीक है, गुड और बैड, बस दोनों दो वर्ड है, कुछ भी लिख दो, मतलब जेन्यून लिखना है, ऐसा नहीं क्या है। मैं नाइट टाइम करता हूँ ताकि क्लियर दिखेगा वो। गुड, तो एक गुड आया है, कुड बी बेटर। अरे नहीं, देर वॉज ओनली 2 ऑप्शंस, गुड और बैड। कुड बी बेटर में तो देखो एवरीथिंग कैन बी बेटर, लाइक यू नो यू हैव टू सेटल समवेयर राइट। मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सर्वर बनाया है, तो लाइक
मैं अभी तुम बोलोगे ना कि एनडीआरपी को तुम, मैं तो एक साल से बोल ही रहा हूँ कि अभी लॉन्च कर देते हैं, पर क्यों नहीं कर रहा हूँ? बिकॉज दैट्स द थिंग, राइट? आई हैव इन माई माइंड दिस थिंग कैन बी बेटर, दिस थिंग कुड बी बेटर, एंड यू हैव टू सेटल एट सम प्लेस। कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा। आपको बस ये सोचना पड़ेगा कि हाँ बस ओके है, इससे ज़्यादा ऐसे तो चलते ही रहेगा कभी। नहीं, थोड़ा वॉकिंग में साइज़ बड़ा हो जाता तो। नहीं, वो बड़ा है, वो तुम्हें छोटा दिख रहा है इसलिए, बिकॉज देखते छोटी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तुम। दूसरी चीज़ ये है कि मैं 1080p में खेल रहा हूँ, और बहुत सारे लोग लैपटॉप में खेलते हैं, वो 720p में खेलते हैं, तो उनको छोटा लगता होगा भले ही। मेरे स्क्रीन पे मुझे इनफ बड़ा दिख रहा है। और ये सारी चीज़ें अभी खाली है ना, मतलब खाना पीना सब कुछ एम्प्टी एम्प्टी है, तो तेरे को बहुत ज़्यादा खाली खाली सा दिख रहा होगा। सो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स मोर देन इनफ। चलो, गुड है। पर ये कभी खत्म, हाँ बस ये समझ गया ये। मतलब इन सर्वर्स के अंदर अब मैं वही कर रहा हूँ, अब मैं चीज़ों को, मतलब अब तुम समझ रहे हो, मतलब पॉज दे रहा हूँ, पॉज इन दैट सेंस कि मुझे पता है उन चीज़ों को मैं और बहुत बेटर कर सकता हूँ, बट मैं करूँगा नहीं। मैं एक बार उनको जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रखूँगा। दे शुड वर्क, बट दे शुड लाइक, भले ही मेरी एक्सपेक्टेशन वैसे भी नहीं हो, बट आई वुड जस्ट पॉज दैम, बिकॉज सर्वर को इस तरीके से तो फिर मैं कभी लॉन्च ही नहीं कर पाऊँगा। चलो, ओके गाइस, गुड नाइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में। नो, आई एम होस्टिंग इट ऑन OVH। OVH के नया डेटा सेंटर है मुंबई, तो कौन, कोई सी भी जगह भेज दें। आई थिंक तुम्हें रोल मिल गया होगा ना, तुम किसी भी चैट में लिखते हैं। ओके गाइस, बाय।